Professor, esteemed corporate leaders, and all my dear students. Good morning. Good morning. नाश्ता अच्छे से हुआ था? Yes. So ये आपके लिए दीक्षारंभन. What does दीक्षारंभ mean? दीक्षारंभ का meaning क्या है? Beginning of learning. At ISAB, it's beginning of learning as well as beginning of your leadership training as well. So when I entered the hall, I was saying, Amardeep, they are all my past students, and I taught them marketing research course here. So I'll be talking about what happens into a classroom at ISAB, and I'm still a student, so I know the dynamics very well. So there are 3 C's which are being taught at ISAB. First is confidence. So lots of presentation, lots of activities which takes place in the classroom that makes you confident. लगता है कि इतना presentation क्यों कराना है? Every course you are teaching a marketing research course and 30 session, 20 session and 20 presentation. इतनी presentations क्यों? As a student we have this query, yes or no? But that makes you confident. From confidence we go to clarity. So we have clarity of thoughts. Whatever we are presenting, we know that why we are presenting. And third, ISAB is known for collaboration. So you have lots of clubs which is there, and this is the only institute, because I've been working with many institutes, but this is the only institute where you learn by doing. You're part of many clubs, you learn those activities, those skills, and then you are trained. So you collaborate with all the industry leaders. This is one. Now, how your MBA journey will take you to the goals that you have. Pradyumna sir talked about you should have your vision. I'll just break that. वो बहुत बड़ा टास्क आपको सर ने दिया है, मैं उसको छोटा कर देती हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ. तो मैं आपको सोचती हूँ, मैं उसको छोटा कर देती हूँ. आपने क्या करना है? योर शॉर्ट टर्म गोल एंड योर लॉन्ग टर्म गोल्स आप उसको मेंशन कीजिए. रिफ्लेक्ट एवरी वीक कि आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए क्या काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप क्या काम कर रहे हैं. दिस इज वन. The second part is to get your short-term goals. You have to go for your short-term goal. We need to complete your MBA with 90% attendance. As sir said, placement हो जाएगा. ISB में मैं 2021 से associated हूँ और मेरे बहुत सारे पुराने जो students हैं, they call me up and said, you must be remembering Shabnam from 2021 batch. On Teachers Day, she called me up and she said कि मैम I bought my first car और इसकी सारी की सारी पेमेंट मैंने खुद करी है. It's giving me goosebumps. और मैंने कहा कि शबनम, मेरी अपनी कार खरीदने की जितनी खुशी नहीं थी उतनी खुशी आपकी कार खरीदने की है. So this is the power. और 2021 ये 2024 की बात है. 2021 बैच में वो थी, 2023 बैच में she must have passed out. And 2024 में she is buying her own car. So आप शबनम से आप कांटेक्ट करके इसको कंफर्म कर सकते हैं. Okay, so this is the power of ISAB. Now short term goal and long term goals आपकी कैसे कंप्लीट होंगे? सभी ने कहा कि रीडिंग. मैं रीडिंग को ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ. I'll just use 3CP जिससे कि आपके सारे काम बिल्कुल टाइमली हो जाएंगे. The first CP is your class preparation. जब आप क्लासरूम में आ रहे हैं उसके पहले यू हैव ISAB में बहुत ही अच्छा सिस्टम है. आपके पास लेक्चर प्लान, लेसन प्लान शेयर विथ यू इन एडवांस विथ रीडिंग फॉर दैट डे. इतना सर सौरभ सर होता है, अभी भी होता है, और हमने इसको अश्योर किया था कि वो हो. तो आपने क्या करना है कि क्लास प्रिपरेशन आने से पहले आप उसको पढ़ के आएंगे. सेकेंड CP इज क्लास पार्टिसिपेशन. सो आई ऑलवेज बिलीव टीचिंग is always a conversation, because books are not Bible and teachers are not God. I may be wrong at certain point of time, और वो तब आप मुझे प्रूव कर सकते हैं जब आपकी CP पहली CP कंप्लीट होगी, आप पढ़ के आए हैं. आप जब पढ़ के आए होंगे ना, then you can set a boundary for us कि ma'am this is the task that we are assigned and we have to go. This is one. Class participation. I don't believe in monologue. हमेशा dialogue, हमारा conversation होना चाहिए. So you participate in class. And what is the third CP? When you go back into your hostel room, you go for post-class preparation. जो आपने क्लास में पढ़ी है
उसको वहां पे जाकर रिफ्लेक्ट कीजिए कि मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को आप कैसे इसे कर सकते हैं. दिस इज वन थिंग. And this is how you can get your short-term goal. Now, if I talk about your long-term goals, I was going through India's skill reports 2025, and do you know, after engineers, MBA graduates are the highest. They have the highest employability percentage. It varies from 60 to 65%. So you are at a very right place. Now, how you can get that goal? Because as शिवांश was telling about कि आपका आईएससीबी में जो ग्राइंड है ना वो हनीमून पीरियड वाला ग्राइंड है. जब आप कॉर्पोरेट में जाते हैं वो ग्राइंड मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. यहाँ पे आपसे गलती होती है, आपके क्लब रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल है, टीचर्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. वहां यू एज अ मैनेजर यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल योर एक्शंस, isn't it? So because you are holding a leadership position, so what you can do as you are graduating, apart from your course curriculum, go and opt for various online courses. So why MBA education is in demand? Because we are multidisciplinary. You have the domain knowledge, you have the various technical knowledge as well. Because if you look at the research domain which is there, and I see one of the panelists is also from the AgriWatch, if I'm not wrong, research domain. Sir will be talking about the use of research and how AI. So you have to learn the nitty-gritty of research, you have to learn AI, various tools which is there, and then how you can generate story out of the data analysis that you have. So you need to have very strong communication skills as well. So these are the various points you will be trained here at ISAB, and then you can reflect there into your professional world. So see, in classroom what happens, I'm already there. आपके जितने भी केस स्टडीज होते हैं we have to do it on our own, and then I'll not take much of time because classroom की जो interactions है, discussions वो तो होगा ही. I'll just stop over here, and I'm looking forward to hear from the corporate leaders, because वो वहाँ की collaboration and network हमारे लर्निंग को आपको और ज्यादा एसिमुलेट करके और उस लेवल तक जाना चाहेगा जो कि आपका लॉन्ग टर्म गोल है. सो थैंक यू एंड वेलकम टू द ISAB फैमिली. आई होप यू हैव ग्रेट टाइम ओवर हियर. थैंक यू.